करने सिर्फ आप जा रहे हैं? हाँ, सिर्फ एक माता जी। एक माता जी जा रही है। भाइयों में सभी तो होते हैं। बोलो। Ask your questions. Would Baba explain to me about the end of the Silver Age, going into Copper Age, what happens to the planet and to the people? पूछ रहे हैं कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के शुरुआत में जब ग्रहों को और लोगों में क्या परिवर्तन आता है, क्या होता है? ग्रहों में और लोगों में क्या परिवर्तन आता है? जो ग्रह अनिष्ट माने जाते हैं और जो ग्रह इष्ट माने जाते हैं, अच्छे काम करने वाले, जैसे बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, वो तो पहले से ही होते हैं बृहस्पति जैसा। लेकिन और ग्रह जो है उनका अस्तित्व तो नहीं होता है त्रेता में। चंद्रमा का अस्तित्व नहीं होता है, चंद्रमा पृथ्वी में मर्ज हो जाता है। जैसे और धर्म उदय हो जाते हैं द्वापर युग से, ऐसे ही और जो ग्रह हैं वो भी उनका अस्तित्व हो जाता है, पहले अस्तित्व में नहीं होते हैं। In the Silver Age, there is just the Jupiter planet, because there are just the best planets in the Silver Age, not the lowest ones. As the other religious islands are merged into the oceans until the Silver Age, by the Silver Age, in the similar way there are no planets also in the Silver Age. मर्ज होकर के रहते हैं। They are in the form of merge. There is no presence of those planets in the Silver Age. And on the planet Earth, in Silver Age, Golden Age and Silver Age, is there only one main land mass that the people live on? वो पूछ रहे हैं कि त्रेता युग में सिर्फ एक ही जगह पर सारे लोग रहते हैं, क्या मतलब एक ही टुकड़ा जमीन? नहीं, फैलता रहता है, इंडिया में फैलता रहता है। इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, इंडिया के अंदर ही फैलते हैं। माने पृथ्वी पर एक ही जगह पर। दक्षिण भारत नहीं होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया होगी। They won't be the south of India. There will be just north of India, and they will spread around north of India. And then at the end of Silver Age, is there destruction, and then all the land masses come out of the ocean and split and form the world as we know it now? त्रेता युग के बाद क्या कोई विनाश होता है क्या? जो आधा विनाश। There's a half destruction that takes place. Half destruction. So if there is destruction and then new lands are formed, how do people and animals get onto the new lands? तो जब विनाश हो जाता है तो फिर नई धरती पर मनुष्य और जानवर कैसे आ जाते हैं? कोई सब थोड़े खत्म हो जाते हैं, सात्विक प्राणी तो पहले से ही होते हैं। धीरे धीरे जो हिंसक प्राणी हैं उनकी भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे विकार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हिंसक प्राणियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। But the violent animals then they come in. As the human beings start getting violent, in the similar way even the
by the vibrations of the human beings, the animals too start getting hungry. When destruction happens, does, say, UK rise out of the ocean at the beginning of Copper Age, British Isles? यूके भी अर्ध विनाश के बाद तुरंत ही ऊपर आ जाता है ऊपर. जब आधा विनाश होता है तो पहले अरब कंट्रीज आते हैं ऊपर, यूके नहीं आएगा. It's the Arab countries that come first. जिस क्रम से धर्मों का आना होता है उसी क्रम से धर्मखंडों का भी आना होता है. समुद्र से ऊपर आ जाते हैं. As the religions are established, in the similar way, number wisely, that specific religious islands also emerge from the oceans. So they are islands. Yes. Then how do the animals and plants get onto an island? तो पूछ रहे कि फिर आत्माएं और जानवर जो है वो कैसे उन आइलैंड्स पर आ जाते हैं. धीरे धीरे जैसे मनुष्य पहुंचते रहे वैसे जानवर भी पहुंचते रहते हैं. As the human beings reach, similarly when the animals start reaching the islands. They swim. क्या होता है कर जाते. जैसे ये तो यहाँ से लेकर के और ये सारा अफ्रीका है और ये यूके है, अरब देश है, एशिया है, ये तो सब मिले हुए हैं ना. इनमें कोई ज़्यादा लंबा अरसा थोड़ा ही है. और जानवरों को थोड़ा सा पानी क्रॉस करने में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है. यहाँ के ही सारे वहाँ जाते रहे. इंडिया से ही रेड इंडियंस पहुँचे हैं अमेरिका में, इंडिया से ही लोग पहुँचे हैं ऑस्ट्रेलिया में. इसी तरह इंडिया से ही फैलते हैं चारों तरफ. The continents of Asia, Africa, Arab countries, etc. They are not very far away from each other. They are close to each other, and the animals take no trouble to swim and reach one country to the other. As the people of India reach the other countries, like the Red Indians went to America, the Indians go to Australia. In a similar way, the animals too go from one country to the other. And then when, in 2000 years ago in UK, the Romans invaded and they wanted to wipe out paganism, which is an ancient religion of the UK, which was already established in UK, and the people were already established in UK 2000 years ago. 2000 साल पहले लोग यूके में फैले हुए थे नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो कह रहे कि कोई एक धर्म था उसको. ये तो ये यहूदी लोग ही वहाँ पहुँचे हैं. ये क्या नाम है, इस्लामी लोग ही वहाँ पहुँचे हैं. इस्लामियों से नई प्रजाति भी शुरू हुई है. Baba saying no. There was no people there. It is because the Islamis were the ones who went there and got settled down. It's in written history that the Romans went there and tried to convert the people into Christians. वो कह रहे कि हिस्ट्री में से बताया जाता है. हिस्ट्री तो मनुष्यों की लिखी हुई है. It's wrong. बाहर से कहाँ से आ जाएंगे. Baba saying that it is the human beings who have written the history. सारा इंडिया से ही प्रसार होता है. फैलते रहते हैं. जानवर हो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो. The animals and human beings, everything keeps on spreading from here itself. Okay. And is it that because of destruction and that the vibrations were all wrong, that it caused the animals to mutate and make like dinosaurs and things at that time? वो पूछ रहे हैं कि विनाश के बाद विनाश के कारण और कुछ तमोप्रधान वाइब्रेशंस के कारण ऐसा है जो डायनासोर्स अलग अलग प्रजातियों में परिवर्तित हो जाते हैं. पहली बात तो ये है कि डायनासोर कितने पुराने थे, ये बात देखने की है. डायनासोर 2500 साल से पुराने हैं ही नहीं. उनका कैलकुलेशन गलत है. जो लाखों वर्ष पुराने हैं उनकी हड्डियां बता रहे हैं. I was asking that first you have to know how long the dinosaurs were from, because they were not from
Long as long time. from 2,500 years ago. So the ones who are discovering all this about the dinosaurs, you may first ask them that from how long they have come. They say millions of years ago, but that is wrong. Their calculations They're must be wrong. wrong also. Yeah. I just wondered whether they mutate because of the Tamil vibrations, mutate from The genetic The pure animals changes. yeah. into the visuals. Genetics change. मानव पूछ रहे हैं कि क्या तमोप्रधान वाइब्रेशंस के कारण ऐसे होता है जो कैसा? उनकी प्रजाति मतलब अलग-अलग जातियों में वो परिवर्तित हो जाते हैं। नहीं, जैसे चौपाई जानवर हैं 4 पाँव वाले, 4 पाँव वाले जो जानवर हैं वो एक जाति से दूसरी जाति में चेंज हो सकते हैं। जैसे घोड़ा और गधा, उनका संक्रमण होता है तो खच्चर बन जाता है, एक नई प्रजाति बन जाती है। ऐसे ये 4 पाँव वाले जो जानवर हैं, किसी जंगल में आग लग गई, कहीं एक मादा या एक नर बच गया और वो दूसरे जंगल में निकल गया और वहां जाकर के दूसरे प्रकार के चौपाई प्राणियों के साथ उसका संक्रमण हो गया, उससे नई जाति पैदा हो जाती है, पुरानी जाति खत्म हो गई। Like for a four-legged animal, if it comes for an example, a horse comes in connection with a donkey, then a new animal is formed as a mule. So in the similar way, Baba is telling when some destruction takes place and the animals are about to run from one place to the other, and they come in connection with some other four-legged animals, then a new species is formed. Thank you. That's it for now, I think. Is it, you said the Islamis went first to England, so is it that the Islamis go first to each and every continent and then the religious fathers of the new religion come and convert them? पूछ रहे अगर इस्लामी पहले इंग्लैंड में गए तो क्या वो हर जगह इस्लामी ही पहले जाते हैं और फिर वहाँ के धर्म पिताएं आकर के उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2500 साल की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में ज़्यादा तो लंबे समय तक दुनिया में इस्लामी ही फैले रहे हैं। क्रिश्चियंस का राज्य तो अभी 100-200 वर्ष के अंदर हुआ है। क्रिश्चियंस जो हैं वो सारी दुनिया में फैले हुए नहीं थे, इस्लामी ही चारों तरफ फैले हुए थे, क्योंकि जनसंख्या व्यभिचार के कारण ज़्यादा बढ़ जाती है। सारी दुनिया पर मुसलमानों का राज्य हुआ है लंबे समय तक। The Muslims, the Islamis ruled for a long period of time because they were the ones who came first. They came 2,500 years ago, and so they were the ones to rule over the world. And they, due to the corruption they spread, so their population was more, and so they ruled most. But the Christians had just come some hundreds years ago, and so there are no Christians who are ruling. They are just ruling now, but it was the Islamis who ruled maximum. So all the old religions that there's some history of, the old, mostly impure religions, and there's many different types around the world, old, ancient. Like paganism. Yes, paganism, like this. So Islam is the root of those. It's difficult Try to to connect those up. What's the question? She Is, understood the question. before white man came to all those Australia and UK, there was people living Indigenous. there, and indigenous people who had their own their own religion. Mother orientated religion. So what was the root of those religions? Where do people live? In the UK, in Australia.
there was there were old, people very there. old religions, The native the people. native The people. native people, yeah. and Were they not there before the Islamis Well, went that's there? what that's what Baba said. Like the Aboriginals came from India, and then they settled there. So they all came from India originally. the question I guess is the very old religions that were originally in many of the other countries that have disappeared, is Islam the root of all those many different? वो बोल रहे हैं कि इस्लाम और दूसरे धर्म वाले जाने से पहले ही उधर जो दूसरे धर्म खंड में रहने वाले लोग हैं ना, उनका नेटिव कोई दूसरे धर्म खंडों को रहते थोड़ी थे, तो पहले सब खाली पड़े समंदर के अंदर से वो धर्म खंड ऊपर आ गया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो, पहले समुद्र के गर्त में थे, बाद में जब ऊपर आए बहुत लंबे समय तक नौका विहार करते करते कोई वहां पहुंच गया, उसका इजाद हो गया। जैसे कि इब्राहिम लिंकन वहां पहुंच गया था अमेरिका में। बाद में धीरे धीरे लोगों को जाना आना शुरू हो गया। पहले वहां कोई नहीं रहते थे। Baba is saying first there were no people living in the different religious countries. When they emerged from the ocean, then the people from India they traveled in the seas for a long period of time, and suddenly they found a new land or a new island, like Copernicus found out Columbus. Like Columbus. Columbus. Oh, Columbus, not Copernicus. Columbus. So, And when did that happen? When did the people from India spread out? When those specific religious islands So at emerged the out end, from the oceans. Oh, so at that time, first the Islamis went, then when the Christians came, would then they still have come out from India? Is that what Baba's saying? बाप बोल रहे हैं मतलब पहले इस्लामी चले गए, फिर बाद में भारत कहाँ चले गए? मतलब दूसरे धर्म खंड में, इस्लामी धर्म खंड में। इस्लामी दूसरे धर्म खंड में चले गए। इस्लामियों के पास उतनी ज्यादा वो नहीं थी, इस्लामी नहीं पहुंचे हैं कहीं दूसरे धर्म खंडों में। ये तो अफ्रीका है, अरब खंड है, और ये एशिया है, और क्या नाम ये आपका ये ब्रिटानिया वगैरह और ये यूके के जो भी है वो सब कंजस्शन आपस में मिले हुए हैं। तो वहाँ नौका विहार से एक दूसरे स्थान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंचने में उनको ज्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन अमेरिका तो काफी दूर है, वो अमेरिका का इजाद मुसलमानों की बस की बात नहीं थी। मुसलमान जो हैं वो सब नजदीकी धर्मखंडों में रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं। The Muslims, the Islamis, they stayed by the nearby islands, like the Africa or the Arab continents, UK, which are close to each other. So through the ship, they just went by sea through to the each other countries. But America is too far away from them, so it was not the Muslims who went to America, because it is very. So that happened later. And then before that happened, the land came up. आविष्कार करने वाली बुद्धि मुसलमानों की नहीं है। बाबा जैसे जैसे धर्म आते हैं, स्थापना होती है, वैसे वैसे उनके धर्म के लोग फैलते गए। नहीं, जैसे धर्मों की स्थापना होती है वैसे वैसे उनके धर्म खंड उसी समय ऊपर आ जाते हैं ना। उसी समय नहीं, उससे काफी समय पहले ऊपर आ जाते हैं। जैसे इस्लाम धर्म आज से 2,500 साल पहले आया, लेकिन वो इस्लामिक धर्मखंड जो है जब अर्धविनाश होता है उसी समय सबसे पहले वो धर्मखंड पहले आ जाता है। अरब देश, अफ्रीका, जहाँ इस्लामी ज्यादा फैले हुए हैं वो धर्मखंड पहले ही ऊपर आ जाते हैं। So is Baba saying, sorry? It is when before the specific religion is established, the
religious islands come up before from the ocean. That is, they emerge out from the ocean. They emerged a long time before itself. Like the Islam religion got established 2500 years ago. But when the half destruction took place, at the same time the Arab continents or Africa, where the Muslims are spread around, those continents came up when the half destruction took place. So there, at that time, only the Islamis would have settled in that area. There wouldn't have been any other lands, but later then they moved to other places. Yeah, okay. So it's a progression. जब उधर स्थापन हुए तब वो वहाँ गए और फिर बाद में दूसरे जब खंड तब वहाँ वो लोग फैलने लगे। इस्लाम नहीं माना अभी इस्लामीज का ओरिजिन तो इंडिया से ही है, बाहर से थोड़ी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी जब बाद में दूसरे धर्मखंड ऊपर आने लगे तो फिर वो दूसरे जगह पर भी जाने लगे। हाँ जी, हाँ जी। But they originated from India itself, the Islamis. The Islamis. So what in England, the Islamis went there. How were they known, or what kind of culture did they set up? जब इस्लामी जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पर उनका क्या रस्म रिवाज थे, कल्चर कैसे No. The thing is, do the course and then you can always क्या रस्म रिवाज? कल्चर कैसा था? कल्चर तो मिक्स होता है, कोई है एकदम कल्चर थोड़ी तैयार हो जाता है। No, that's what he's asking. That's what's in the The movies. culture is That's what he just says. doesn't come up I told in him. any way. It is mixed up. लंबे समय के बाद कल्चर तैयार होता है, नया कल्चर। After a long period of time, the culture is developed. Because in the science, they talk about like the American Indians travelled through Europe across the Arctic, which wasn't actually not frozen, then down Canada, North America into South America. So that would have taken hundreds of a long time to go all that distance. So I think what we're trying to ask is, where did they start from, if they did start, and is that why when they got there they were their religion that they began with was different? They had changed. The history says they started from Middle Asia, north of India. Yes, I know. I'm just. क्या बोला? पहले वो क्रिश्चियन सारे यूरोप, उधर कनाडा और जहाँ ठंडी प्रदेश में गए ना, तो कौन सा रूट से गए? मतलब पहले वो कहाँ से शुरू किया और कहाँ गए? अरेबियन कंट्रीज से ही जाएंगे। जब इस्लामी फैले हुए अरेबियन कंट्रीज में, अफ्रीका में, वहीं से जाएंगे। दूसरी जगह कहाँ होंगी? Then go from the Arab continent itself, because that came up first. So there was no other route. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि साइंस में ये कहा जाता है कि जो अमेरिकन इंडियंस थे, वो आर्टिक ओशन से वो करके फिर वो लोग कनाडा और सारे कनाडा वगैरह हो करके फिर वो लोग दक्षिण अमेरिका गए। तो वो लोग किस रूट से दक्षिण अमेरिका में बाद में गए हैं, उत्तरी अमेरिका में पहले पहुंचे हैं। हाँ, आर्टिक ओशन हो करके, आर्टिक सर्कल हो करके वो लोग कनाडा से नीचे गए। हाँ, तो कोई बात कही जाए तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना। कुछ कहने को तो कुछ भी कहते हैं, प्रूफ भी तो बताएं साथ में। Baba is saying that there are a lot of things to be said, but there should be a proof behind everything. Whatever science says. So that's the scientists say lots of things, but is there any proof? They say this. They're saying they're trying to prove is it true. यूके से नॉर्थ अमेरिका तक क्रॉस करके जाना वो तो सीधा और सहज दिखाई पड़ता है फिर भी, लेकिन आर्कटिक महासागर से उधर से नॉर्थ से होते हुए फिर कनाडा में पहुंचना, जबकि उस समय साधन नहीं थे, ये तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े हिमखंड तैरते हुए रहते हैं,
और उसे बचाव का कोई साधन नहीं होता था उस समय। छोटे मोटे जहाज तो यूं ही पिस जाएंगे। Baba is telling that it is easy to go from UK to America, but it's very difficult to pass out from the Arctic Circle and then go through Canada. It is because there in the oceans there are big icebergs, so the small ships can get crushed in the icebergs. It's very difficult to go through the long route. But they say that there was a strait there, it's called the Bering Strait. There was actually a land which was joined. It was joined from Russia So they could across to walk? the Arctic. So they could From walk which place? from Russia across to the Arctic or to Canada. And then later on it got filled in. The land went away and the ocean came over. That's what they say. वो कह रहे हैं कि पहले ये कहा जाता था कि वहाँ रशिया से एक रास्ता था आर्कटिक ओशन तक जाने के लिए। बाद में फिर आर्कटिक महासागर बर्फ से ढका हुआ रहता है। Called the Bering Straits. और उसको क्रॉस करना आसान नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद वो पानी से ढका गया सागर से। कैसे हो सकता है? या आज से 2500 साल पहले अर्धविनाश हुआ। 2500 साल पहले जब अर्धविनाश हुआ तभी तो परिवर्तन होगा पृथ्वी में। उससे पहले परिवर्तन कैसे हो सकता है? Mama is telling that the Arctic Circle is covered fully with ice, and how can the change take place before the half destruction has taken place? And the half destruction has taken place just 2,500 years ago. So all the change takes place after that. So how can this be then? No, well, I think it happened after the change, after those lands came down. Then they travelled across. Is that right? After the Would lands have to came. be, yeah. Because America was not discovered until a lot later. So yeah, so it was very late. After the half. But the American Indians got there somehow. And their features, After destruction, then they went. they went there long before Columbus discovered America. But they say, the scientists or whoever, historians say that there was this strait that went across, and so later on it got filled in with the ocean. But that's how they got across from Middle Asia or from North India. But it is after the half destruction. After the half. Yeah. कह रहे हैं कि अर्धविनाश के बाद ही कोलंबस के अमेरिका डिस्कवर करने से पहले नहीं, उनके डिस्कवर होने से काफी सालों पहले ही अमेरिकन इंडियंस वहाँ जा चुके थे। वो रेड इंडियंस वहाँ रह रहे थे। जो रास्ता भूल गए, नौका विहार करते 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 अपने जो छोटे मोटे जहाज थे उन जहाजों से यात्रा करते करते रास्ता भूल गए और वहाँ पहुँच गए। उन्हें वापस आने का रास्ता याद नहीं रहा, वो वहीं के वहीं रह गए। Baba is telling that the Red Indians, they were going through the ship, those small they went by ships, through the ships. seaway, and when they reached America, they forgot the way to come back, and so as they did not know the route to come back, they stayed permanently in America. And then their culture changed because they were far away from India. पूछ रहे कि इंडिया से दूर होने के कारण उनका कल्चर भी चेंज हो गया। चेंज हो गया? Yes, it got changed. And that would be similar for the other countries. England, the Islamis came, but it changed. Their religion changed. तो पूछ रहे कि ऐसे ही हर धर्म खंड में होता है क्या? जैसे बड़ा परिवर्तन हो जाता है। there is a vast change that takes place. So I've got a couple of questions just with the animals, going back to the animals. Baba mentioned about the animals swimming from one land to the next, but how does he explain in Australia there are some animals that are nowhere else, like the kangaroo is only in Australia, so did it come from somewhere else and then became extinct in the other area, or is that what happened? वो बोल रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे जानवर है जैसे कंगारू है, तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं, तो फिर वो कहाँ से आया
और अगर कहीं से आया तो फिर वहाँ पर उसकी जात प्रजाति खत्म हो गई क्या? ऑस्ट्रेलिया में खत्म कहाँ हो गई? ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ही है मोस्टली। Baba is telling that it started from Australia and it's in Australia, the kangaroos. So it came with as the vibration changed, the animal emerged. वो पूछ रहे कि वाइब्रेशन के चेंज होने के कारण वो जानवर अपने आप आ गया क्या? अपने आप नहीं आ जाते हैं। जैसे बीज होता है और बीज अपना मौसम आता है तो वो बीज उगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही उनका अपना टाइम है। जब ऐसा टाइम हुआ तो कुछ संस्करण ऐसे हुए जिसके आधार पर वो एक नई जाति तैयार हो गई। According to the monsoon, as the climate, the seed is sown and the plant comes up. So in the similar way, Baba is telling, according to the time, the right time, some two species must have come in connection, and then the new form of kangaroo must have taken place. जो चौपाए हैं उनकी एक जाति है जो 4 पांव से चलते हैं। All the four-legged animals have got one species. और उनका संक्रमण होता रहता है एक जात से दूसरी जाति में, दूसरी जात से तीसरी जाति में। And they keep on coming in connection with the other species from one to the other. And then the new is formed. And when Baba talks about the half destruction, there's also, I remember reading about after the Hiroshima and Nagasaki bomb, that the plants grew very fast and everything was mutated from the radioactivity. Does that mean that there was some radioactivity from perhaps like a meteor also hit the earth to create that half destruction and influence the animals, the types of animals? Is that a... Yes, he's trying to find out about the radioactivity, whether that speeds up the process of mutation or generating new species. Makes the animals change faster. वो पूछ रहे हैं कि अर्ध विनाश के बाद जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो बम विस्फोट हुए तो उसके कारण जो रेडियो एक्टिविटी के कारण वो पूछ रहे हैं कि उसके कारण कुछ प्रजातियों में जल्दी परिवर्तन आने का कुछ प्रभाव पड़ता है। एक होता है जैसे कोई चीज सड़ती है तो सड़ने से उसमें भांति भांति के कीड़े पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही जो दुखदाई प्राणी हैं वो विनाश होने के बाद शुरू हुए हैं, उससे पहले दुखदाई प्राणी नहीं थे। बहुत थोड़ी सी जातियां थी और वो भी सुख देने वाली थी, दुख देने वाली थी ही नहीं। आधा विनाश होने के बाद वो सड़ान पैदा हुई है बेविचार की, उससे ढेर सारी जातियां पैदा हो गई। Like something gets spoiled, so there are insects coming up on it. In a similar way, after the destruction, before the destruction, there were very few species, but after the destruction, due to the corruption and the adulteration, the different species they start coming up, and they were not the good ones. So there were very few before the destruction, but after the destruction. So is Baba saying it's got nothing to do with the radioactivity speeding up the process? Nothing to do with it? Vibration. It's So about it's to do with vibration. the vibration. Yeah. So it is the vibration which is causing all the change. पूछ रहे हैं कि वाइब्रेशन के कारण सारा परिवर्तन आता है। सारा परिवर्तन वाइब्रेशन से होता है। पहले बुद्धि मनुष्यों की ऊपर थी, सारा कंसंट्रेशन ही ऊपर था। और कंसंट्रेशन धीरे धीरे बहुपास में आते आते नीचे उतरते फिर बुद्धि एकदम नीचे गई। So everything's created by the thoughts. Baba is telling that first the energy was been stocked on the top, the whole concentration of the body was stocked on the top, but then later on, due to the degradation, it starts when people start coming in connection with each other. So because of the organs, the connection of the organs, the energy starts flowing downwards.
In one more question. In the Murlis, it has been said, as far as I think, that in Golden and Silver Age, we do not cause any sorrow, and we do not kill anything, even insects. How is it? I'm wondering, how is it possible to walk on the earth and not step on something like an ant? Do we have? So that's sort of my first question, and I'm sort of wondering, do we have a less of a physical body in Golden and Silver Age, more of a spiritual, a lighter body, so that has been possible? पूछ रहे हैं कि उन्होंने मुरली में उन्होंने पढ़ा है कि सतयुग और त्रेता में जैसे हम किसी को दुख नहीं देते हैं, तो वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं उस क्या उन पर भी पाँव नहीं, कीड़े मकोड़े होते नहीं वहाँ? Obviously there are no insects in the golden and silver age. So you can't kill anything. You can't stand anything, it. see? The cockroaches only start after the Well, when you think all insects eat वो meat, पूछ so रहे हैं can't कि be तो very क्या वहाँ पर strong. हल्का शरीर होता है, मना हैं? जो जड़ती शरीर हाँ, हल्कापन रहता है। यहाँ दर्द होता है शरीर, वहाँ कोई शरीर में दर्द थोड़ा ही होता है। there is A lighter body. A lighter The body. lighter that is you don't feel heaviness there, and so you don't feel the pain, etc. You're happy. The elements are more pure, so Lighter body. There's absolutely no accidental death or untimely death. ये पूछ रहे कि अचानक अकाले मौत तो वहाँ होती नहीं है। जब मन एक दूसरे से टकराता नहीं है, मन का व्यभिचार नहीं होता है, तन का व्यभिचार नहीं होता है, तो वो एक्सीडेंट क्यों होगा? I was telling, when there is no corruption or adulteration spread through the organs or the souls. मेंटल टेंशन यहाँ बढ़ रहा है, वहाँ मेंटल टेंशन थोड़ी होता है। Here there is mental tension, there is no mental tension there, so No stress. that no accidental deaths there. व्यभिचार के कारण मेंटल टेंशन होता है। Because of the corruption. करप्शन। There is the mental stress. So how light are we? Golden? Can we fly? Can we fly? वो पूछ रहे हैं कि कितना हल्के हम रहते हैं वहाँ पर, कितने हल्के हम वहाँ रहते हैं, क्या हम इतने हल्के रहते हैं कि सोने की दरकार ही नहीं। Yes, so we feel so light that there is no need for us to sleep. Take rest. रेस्ट की दरकार ही नहीं। There is no need for rest. And is the Veman? Yeah, The Veman, can we fly? is it we fly with our lightness, or is actually there a vehicle that we use? क्या वहाँ हम अपने शरीरों से उड़ेंगे क्या, या वहाँ कोई वाहन होंगे जिससे हम उड़ेंगे? पक्षी ही बढ़िया होंगे, प्राकृतिक बनाए हुए। So nature will make the birds such that they help us to fly. The birds help us to fly. There you go. We can get on their backs and go with them. क्या Yeah. उनके पीठ पर बैठ करके So we're जाएंगे? light. Yes. And they will cooperate. They do what we want. They go where we want. वो पूछ रहे कि वो हमें सहयोग देंगे, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहीं ले जाएंगे। आप उनको यूँ आँख का इशारा करेंगे तो ऊपर उड़ेंगे, आप इशारा करेंगे तो नीचे जाएंगे, इशारा करेंगे तो इधर जाएंगे, इशारा करेंगे तो इधर जाएंगे। आँख के इशारे को पकड़ेंगे। Through the indications of your sight, they, if you say that you want to go to any place, they'll take. Isn't that through the thoughts? V-man, that's what it's called. V-man. Yeah. Through the eyes. वहाँ वो पूछ रहे कि संकल्पों के आधार से नहीं जाएंगे। नहीं, But it's all No, that's not through the thoughts. संकल्पों It's की not पावर through तो the मनुष्य के thoughts, पास होती है। Through the eyes. Through the हाँ, eyes. संकल्पों की पावर मनुष्य के पास होती है, वाइब्रेशन की पावर मनुष्य के पास होती है। जानवरों के पास संकल्पों की और वाइब्रेशन की पावर नहीं होती है। Is it that there It is is the human beings who have got the power of vibrations and thoughts, not the animals. So through the indication of the eyes, they move around. is it that is the technology in Golden Age more advanced than we have now? वो पूछ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होगी सतयुग में जो अभी है।
ये मन की टेक्नोलॉजी तीखी है। The mental technology is more sharp for them. Okay, so we live more naturally. We don't Yes. need cars or No. telephones, or we live with nature. वो पूरे प्रकृति के साथ ही रहेंगे ना। वहाँ वाहनों की दरकार नहीं होगी, कार आदि की। वहाँ प्रकृति प्राकृतिक, नेचुरल, एवरीथिंग इज नेचुरल। Do we wear clothes? क्या हम कपड़े पहनेंगे वहाँ? कपड़े तो देवान के काम में पहने जाते हैं। The clothes are being worn due Body to their body consciousness. consciousness. None. And do we have, is there education? Is there schools or anything like this? Or क्या वहाँ पढ़ाई आदि होगी? और लंबी चौड़ी पढ़ाई करने की क्या जरूरत? सिर्फ एक दूसरे को थोड़ा सा लेन देन करने की जरूरत है, और क्या पढ़ाई का क्या करना है? What is the necessity of education? The Baba is asking. We just have to. because we're pure, we don't need it. But even to teach art or music, do we have that type of thing? वो पूछ रहे वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से सीखते रहते हैं, एक दूसरे संसर्ग संपर्क में आने से ही सीख जाते हैं। That is in coming connection with the each and other, they learn it automatically from each other. अलग से सीखने का कारण है। Eyes are with them. Cool. Baba, it said that we should give everything, our body, mind, wealth, everything to Baba. Is that possible, living in Australia, or must we come here? Should we come here? वो पूछ रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ बाबा को स्वाहा कर देना है, तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया में रह करके संभव है या उसकी क्यों नहीं? ऑस्ट्रेलिया में सेवा नहीं है क्या? Baba is asking why there is no service in Australia. ऑस्ट्रेलिया में भी तो सेवा है, ईश्वरी सेवा। जहाँ ईश्वरी सेवा है वहाँ तन मन धन स्वाहा किया जा सकता है। Where there is godly service, then you can surrender. But we should. But you have to live, so you've got to have your money. But we should let Baba know everything. Should we let Baba know our finances and just? We should be a trustee. We shouldn't. We should let him know absolutely everything that we're doing. We should let him know everything. पूछ रहे क्या हमको सब All the कुछ time. आपको बोलना, बताते रहना है हर बार हम क्या क्या कर रहे हैं, ना हम जो कुछ कर रहे हैं वो आपको समय अनुसार टाइम टू टाइम बताते रहना है। कदम कदम पर पूछते रहना अच्छा है, क्योंकि बाबा की जितनी भी ब्रह्मा के मुख से श्रीमत मिली हुई है, वो सारे का सारा अध्ययन और उस पर मनन चिंतन मंथन हर एक की बस की तो बात है। पूछते रहे कदम कदम पर तो अच्छा ही है। Baba is telling that it is better to follow Srimad in each and every step of the life. It is because it is not possible for everyone to churn on the Srimad given by the mouth of Brahma, through the mouth of Brahma. Baba, I've been going to a BK centre in my country where I live. I live in the United Arab Emirates. I stopped going because I was getting frustrated. But there is no more sustenance in that country for me. Is it better for me to keep going and try and get sustenance, or just trying to self-sustain? वो यूएई में रहते हैं, तो वहाँ पर बीके सेंटर में उनका जाना अभी भी पालना लेना ठीक है या वो सेल्फ सस्टेनेंस अपना ही? पांडव तो गुप्त होकर के घूमते हैं, पांडव थोड़े से होते हैं और कौरव और यादव तो ढेर होते हैं। तो आप उनमें गुप्त होकर के घूमते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए। उनमें से जो अच्छा
अच्छा कोमल जीवड़ा परमात्मा का बच्चा दिखाई पड़े उसको ज्ञान सुनाते रहिए. He was telling that the Pandavas are very few in number, while the Kauravas are more in number. So the Pandavas are incognito. So you keep roaming in them, but then do the service. That is, if you feel that there is some sweet child of Baba, then give them the Introduce to knowledge. the knowledge. Yes. So be incognito and Yeah. be within them. Yeah. Is it okay to email a BK that you've never met? वो पूछ रहे कि जिस बीके से कभी मुलाकात नहीं हुई है क्या उनको ईमेल करना ठीक है? आप भी तो ईमेल से ही आए हैं. I To was give saying introduction. that even you have come through the email. Because I was in the BKs for a short time and I did not make many connections with BKs. So is the best way for me, what's the best way? Should I just open a Panda Bhavan and just work on my stage and attracting people to me? Or should he be incognito also? Or should I go to the center? The PKs don't have time for the email. Listen. Huh? What did you say before? I went to the BKs for a very short time and not regularly. So I'm not making connections there, very few. So and they also, when I'm finding the knowledge, I went direct to the head of the center and gave them the advanced knowledge. So I'm not, they have a meeting about me and about the advanced knowledge. How can we stop this advanced knowledge? So I can go, should I go back if they know? Should I try to? And say nothing and sit, or should I, through my own vibrations, attract people to me? वो बोल रहे हैं कि वो कुछ समय के लिए बीके सेंटर में गए थे और वहाँ पर ज्ञान सुनाने की कोशिश की. फिर वो हेडक्वार्टर्स भी गए थे वहाँ पर और उन्होंने वहाँ उनको पता चल गया कि क्योंकि इन्होंने वहाँ ज्ञान दिया तो उनको पता चल गया कि एडवांस ज्ञान में जा रहे हैं और एडवांस ज्ञान के बारे में भी पता चल गया. तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरा वहाँ जा करके चुपचाप उन लोगों के बीच बैठना ठीक है या मैं वाइब्रेशंस के द्वारा सर्विस करता हूँ. उनको पता चल गया है फिर तो वहाँ जाना ठीक नहीं है. If they have come to know that you have come here, then it's not good to go. उनके सबके बीच में सुनाना भी नहीं चाहिए. And you should not. एक को पकड़ो और एक को संदेश दो. अगर वो दिखाई पड़ता है कि हमारा संदेश ले रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो फिर उसको एकांत में ले जाके और आगे बढ़ो. It is not right to give knowledge in front between many people. You just take a single person aside and give the introduction. If you feel that he is happy listening and he likes the knowledge, then you can take him one side and keep going with the knowledge, but in an incognito way. But so I should not even go and just sit. They would probably tolerate me just to sit and do nothing but वो sit. बोल रहे हैं कि मैं जाकर के सिर्फ चुपचाप बैठ सकता हूँ क्योंकि वो सहन कर सकते हैं मेरा सिर्फ चुपचाप बैठना. हाँ. तो क्या ऐसे कर सकता हूँ? वो तो ऐसे बैठे हो जीवन जब तक तुम्हारा वाइब्रेशन की पावर नहीं आएगी तो कुछ होगा ही नहीं. If they are just tolerating, then you just keep sitting until your vibrations, the power of your vibrations keep working. To draw people. क्योंकि उनका संगठन ज्यादा है, यूनिटी ज्यादा है और आप अकेले हैं. You are alone and their gathering, their unity is more. Wouldn't work. I'm having contact. I told Baba about Jerry and Peter, some new BK souls. One soul, Jerry, has left the BKs. Is now watching the Murlis of Baba. So
So maybe I should put more energy to sustaining them because they have connection to so many BKs. वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 लोगों को संदेश दिया और उसमें से एक को तो संदेश दिया अच्छा भी लगा उनको, तो मुरलिया भी वो पढ़ रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनको और अपनी ताकत से आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि वो बहुत बीकेस के कनेक्शन में है। मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा की कैसेट सुनने तक तो नहीं पहुँचे। वो बाबा की मुरलियाँ देख रहे हैं, VCDs ट्रांसलेशन के VCDs देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो आगे बढ़ो। Keep going further. जिसकी बुद्धि में एडवांस कोर्स पूरा बैठ जाएगा फिर तो वो उधर जाना ही अच्छा, उसे अच्छा नहीं लगता है। The one whose intellect, the advanced course is seated fully, would not like to go. Would not what? Would not go in the basic. No. तो अच्छा ही नहीं लगता है। He won't like to go. He was waiting for many years for this. He was waiting for many years The brother. because he knew there was something else. वो बोल रहे कि वो भाई को वैसे भी बहुत सालों से वो इंतज़ार कर रहे थे यहाँ आने की, क्योंकि उनको पता था कि और भी कुछ अलग है यहाँ, कुछ हट करके है बेसिक ज्ञान से। He's still not very clear about it, though, Ben. My service, not so good. But I want to try it. I will try. I have given him some to the best I could, explained things, and so I want to get my stage so well that I can, when I go back, I can give the full course to them properly. ना वो उनको संदेश दिए हैं तो और भी उनको एनकरेज करें पूरा संदेश देने के लिए, ताकि वो और भी पक्के हो जाए। यहाँ से जाने अगर सफलता मिलती है तो हिम्मत उल्लास बढ़ता ही है। So going back from here, enthusiasm is increased more and more. When we meet souls that are interested, that haven't had any gyan, they're new souls to the Brahmin family altogether, do we give them the basic knowledge and the advanced knowledge, or do we just give them the basic knowledge first? वो पूछे जो ज्ञान जानते ही नहीं बिल्कुल, जो अज्ञानी है, तो उनको जब ज्ञान देना है तो पहले बेसिक देकर के फिर एडवांस दे, या सिर्फ बेसिक दे पहले? बेसिक ज्ञान ओरिजिनल बेसिक ज्ञान is actually advanced ज्ञान For new souls. But do we tell the new souls about Shivbaba in the corporeal form? वो पूछे क्या हम नई आत्माओं को बता सकते हैं कि बाप का साकार पाठ शुरू? बताएं भले, लेकिन उसको गहराई से उठाएंगे वही लोग जो पूर्व जन्म में आ चुके होंगे। You can tell them, but only those souls can go deep in that who have in the previous birth have taken the knowledge. So if they look as though they're understanding, then they probably have second Brahman life. पर्सनल बातचीत किसी को करते हैं। Personal question. Yeah, you got a personal question. Can I ask about the medicines you say? Yeah. पर्सनल बना एक ट्रांसलेटर हो, बाबा हो और व्यक्ति हो।